Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewers, we are going to discuss applications of linear equations. This will be perhaps our last lecture on this particular topic. The numerator of a fraction is 5 less than its denominator. Concentrate on the question. The numerator of a fraction. There is some certain fraction whose numerator is 5 less than the denominator. What is this? Basically, a relation between numerator and the denominator of a certain fraction is given to you. Now look at the fraction. This is the fraction 3/8. What is numerator in this fraction? Zohaib? This is certain fraction. 3/8 is a fraction. What is numerator in this fraction? Yes? Sir, 3. Okay. Sir, 3. Okay, Hamna, what's denominator? 8. 8. In this particular fraction, we have numerator 3 and denominator 8. Look at once again the question. The numerator of a fraction is 5 less than its denominator. Is it true for this fraction? Here, Yes, sir. numerator is 3 and denominator is 5. Denominator is 8. And numerator is obviously 5 less than the denominator. My next question is to Hamna, whether this is the required fraction, Hamna? Yes. No. Look at another fraction, 6/9. Sorry, 4/9. In the next fraction, which I told you, 4/9, numerator is 4, which is 5 less than the denominator. Now, according to your answer, 4/9 will be the required fraction. Yes, sir. So there may be many fractions whose numerator may be 5 less than the denominator. Therefore, we cannot say this is the required fraction. Okay, in order to find the required fraction, we read the complete question. Some other information should also be given to you. For the time being, numerator of the fraction, if you suppose numerator of the fraction x, then what will be its denominator according to this statement? Sir, x plus 5. X plus 5. Who is telling me x plus 5? Sir, Zohaib. Okay. Hamna, because as I told you that already we attempt to suppose smaller quantity, and here numerator of the fraction is smaller. Therefore, after supposing that numerator of the fraction is x, its denominator will be x plus 5. Correct, Hamna? Okay, sir. Okay. Now look at the fraction x/x plus 5. This is the fraction. You are going to find some fraction whose numerator is 5 less than the denominator. We assume that numerator is x, then obviously its denominator will become x plus 5 and fraction will be x/x plus 5. Now look at the other information according to the question. If 1 is added to the numerator and the denominator, 1 is added numerator in the numerator, then its numerator will become x plus 1 and its denominator will become x plus 5 plus 1. Understand? What was the question? There was a certain fraction whose numerator was 5 less than the denominator. We have assumed its numerator x, then its denominator will become x plus 5. According to other information given in the question, if 1 is added to the numerator and the denominator, obviously this new fraction will be this one, x plus 1 over x plus 5 plus 1. Understand, Hamna? Yes, sir. Okay.
the new fraction is 2/3. Now, what is our new fraction? Can you tell me in this screen? Our new fraction is this: x plus 1 divided by x plus 5 plus 1, which is obtained by adding adding 1 in the numerator and the denominator. This is our fraction. And what he says this fraction is 2/3. Zohaib? Yes, sir. Once again, I read complete question. The numerator of a fraction is 5 less than the denominator. If 1 is added to the numerator and the denominator, the new fraction is Sir, 2/3. Sir? Yes, yes. सर टू ऊपर 2 + 1 होगा एंड नीचे 3 + 1 + 5 होगा. नहीं 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 नहीं, आप सारा ही क्वेश्चन ही आपने गलत कर दिया. देखो, क्वेश्चन ये था कि एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से 5 कम है. हमने उसका जो न्यूमिनेटर था वो एक्सपोज किया. और पहली जो फ्रैक्शन है वो क्या है? अगर आप न्यूमिनेटर एक्सपोज करते हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन x + 5 उसका डिनोमिनेटर होगा. और फ्रैक्शन क्या बनेगी? ये वाली. इस फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर में जब आप 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा? x + 1. इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा? x + 5 + 1. तो अब वो जो नई फ्रैक्शन आई है वो क्या है? हमारे पास नई फ्रैक्शन बता सकते हैं क्या है? न्यू फ्रैक्शन जो है वो ये है, x + 1 / x + 5 + 1. और वो कहता है न्यू फ्रैक्शन किसके इक्वल है? 2 और 3 के. अब क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? जोहेब? यस सर. तो फिर आप क्या कह रहे थे 1 ऐड करें? 1 ऐड करना है आपने अज्यूम्ड न्यूमिनेटर में, और आपका सपोज न्यूमिनेटर x है. इसी तरह 1 आपने ऐड करना है अज्यूम्ड डिनोमिनेटर में जो कि x + 5 है. तो ये किया तो है मैंने, आप क्यों नहीं समझ रहे? x + 5 डिनोमिनेटर था, इसमें 1 ऐड तो किया हमने. हमने आपको क्लियर हुई बात? यस सर. जोहेब, आप बताएं क्या पूछ रहे हो? सर कुछ भी नहीं. आप बताओ फिर आगे क्या करना है? अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप यही था. हमारी जो फ्रैक्शन आई है x + 1 / x + 5 + 1 आई है, और it should be equal to 2/3 according to the given condition. By the given condition we have x + 1 / x + 5 + 1 is equal to 2/3. You are not attentive, Zohaib. यस सर. Look at after adding 1 in the numerator and the denominator, our new fraction was x + 1 / x + 5 + 1. सर. Yes. सर. सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन असल इशू तो यहाँ पे है. यहाँ तक था, ये समझ आ गई यहाँ तक? यस सर. चलें, नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है उससे पहले आप सिंप्लीफाई करें लेफ्ट हैंड साइड को. द न्यूमिनेटर विल रिमेन एज इट इज x + 1 and the denominator will become x + 6. Now we are going to cross multiplying. 3 is multiplied by x + 1 and 2 is multiplied by x + 6, and then this 3 is multiplied by x giving 3x + 3, and 2 is multiplying with this x giving 2x, and 2 × 6 gives you 12, and taking 2x on the left hand side will give you 3x - 2x is equal to 12 - 3. Taking this 3 on the right hand side and putting -3. Obviously this will become 3x - 2x will become x, and this 12 - 3 will become 9. Therefore we have found the numerator of the fraction 9. X is the numerator of the fraction. Required fraction फिर क्या बन जाएगी? As we know, the required fraction is x / x + 5. Putting the value of x 9 / 9 + 5, and this becomes 9 / 14. Now whether numerator is 5 less than the denominator? जी बताएं. न्यूमिनेटर 9 है और डिनोमिनेटर जो है हमारा 14 है, तो न्यूमिनेटर जो है वो 5 लेस देन है ना? यस.
No, ठीक no, है, no, Yes. sir. 5 ही है, 5 लेस है जोहेब, नो नो क्या? Okay. Yes, 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 sir. ओके, आपने क्वेश्चन समझ लिया है? सबको Yes, समझ? sir. अब आप क्वेश्चन जो है ना इसको चेंज करके भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ दूंगा आपको, ताकि आप खुद करें। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 9/14। Our next question is, the numerator of a fraction is 2 less than its denominator. Same kind of the question. Numerator is 2 less than the denominator. If 3 is subtracted from the numerator, now look at the operation. Here you are not going to add. What you have to do? If 3 is subtracted from the numerator and from the denominator, in the previous question you added 1 in the numerator and the denominator, and now you are going to subtract 3 from the numerator and the denominator. And what is the new fraction? That is 3/4. The new fraction obtained is 3/4. Find the fraction. हम ना कर सकते हैं क्वेश्चन खुद? अगर मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करूं, हम ना? Yes, sir. जोहेब, Yes, sir. जोहेब, Yes, sir. okay, tell me what will be the steps? What we have to do first? The numerator of fraction is 2 less than its denominator. How can you solve this question? What would be the first step? Anybody can tell. Sir, x minus 2 आएगा पहले. X minus 2 क्या होगा? Numerator. अच्छा, फिर डिनोमिनेटर क्या होगा? Sir, 2. No, sir, no. Sir, x minus 3. बेटा पहले, अभी तो फिर आपने क्वेश्चन समझा क्या है? क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 2। अब मैं रीड कर रहा हूँ दोबारा, जरा ध्यान से पढ़ने सुने। क्वेश्चन है द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 2 लेस देन द डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन है जिसका हमें पता ही नहीं है, उसका ये पता है कि उसका न्यूमरेटर 2 लेस है देन द डिनोमिनेटर। If 3 is subtracted from the numerator and from the denominator, the new fraction obtained is 3/4. Find the fraction. अगर न्यूमिनेटर में से 2 कम किया जाए, 3 कम किया जाए और डिनोमिनेटर से भी 3 कम किया जाए, तो नई फ्रैक्शन 3/4 बनती है। नई फ्रैक्शन का पता है, और जो एक्चुअल फ्रैक्शन जिसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करके ये होगा. यस Sir, x minus 2 and over नहीं, minus 3. आप स्टेप्स ही खराब कर, आप सारे स्टेप्स ही खराब कर देते हैं ना। अभी तो क्वेश्चन पीछे, मैं पीछे जाता हूँ जरा, पिछला क्वेश्चन देखें कि उसको हमने कैसे प्रूव किया। मैं जरा इसको पीछे लेके जाता हूँ ताकि आपको समझ आए कि हमने किया कैसे है। आप भूल गए हैं? हाँ जी, हम ना, आप बताएं। हम ना, स्टेप्स क्या होंगे? Yes, sir. स्टेप्स क्या होंगे? ये देखें, अब आप अभी भूल गए भाई, आपने फ्रैक्शन फाइंड करनी है ना, तो फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा? अभी तो बताया, ये आपके सामने है, जरा देखें जरा जोहेब, ये फ्रैक्शन थी, ये कोई फ्रैक्शन है। अगर आपने नई कोई फ्रैक्शन फाइंड करनी है तो आपको क्या क्या फाइंड करना होगा? एक उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर फाइंड करना होगा, और एक उस फ्रैक्शन का क्या करना होगा? डिनोमिनेटर। और इतने लेक्चर से मैं आपको बता रहा हूं कि जब हमने कोई चीज फाइंड करनी होती है तो वो अज्यूम करते हैं, सपोज करते हैं, और वो करते हैं जो छोटी हो। तो जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसके Sir, can I मुताबिक, tell? यस, Sir, denominator of the fraction is x. डिनोमिनेटर इज स्मॉलर और न्यूमरेटर इज स्मॉलर, Numerator. तो विच शुड यू सपोज? Okay, if you suppose x denominator, then what will be the numerator? Sir, denominator is equals to x and numerator is equals to x minus 2. Okay, this is also correct, but there is another way which I just told you. Hamna, can you tell?
We have to find the numerator and the denominator. Okay, for this purpose, what will be the first procedure? What will be the first step? How can you find? Hamna, here is written. Here is written. Because you have to find numerator, therefore you have to suppose numerator. Sir, denominator is big. Denominator? जी बताएं. सर न्यूमरेटर x हो जाएगा और डिनोमिनेटर x plus 2 हो जाएगा. तो फिर आप पहले क्यों नहीं सोच के बताते? जो आपने पहले क्वेश्चन समझ नहीं थी. समझ तो मैं तो काफी देर से बता रहा हूँ आपको. तो दूसरा ये है कि अगर आपने जो पहले बताया वो भी ठीक है, उसके मुताबिक डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा x और न्यूमरेटर हो जाएगा x minus 2. हम ना, यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग. हम ना, आर यू फॉलोइंग? Yes, sir. Sir, I was reading the and understanding the question. Okay. It is so simple. Just suppose numerator of the fraction x. That makes no difference if you suppose denominator of the fraction. If you suppose denominator of the fraction, then its numerator will become x minus 2 according to the given condition. But here you have supposed numerator of the fraction, then its denominator will be x plus 2. Why? Because the relation among the numerator and denominator is given to you. What is that relation? This is 2 smaller than the denominator. Therefore, if you suppose x as the numerator, then obviously denominator will become x plus 2. What is the given fraction? What is the required fraction? That is x over x plus 2. Fraction is numerator over denominator. Now, what you have to do according to the question, you have to subtract 3 from x, that is from the numerator. X minus 3 divided by x minus 2 minus 3. Okay. Sir, no, sir, no. X, sir. Yes. X plus 2 minus 3. Yes. X plus 2 minus X, 3. you are subtracting 3 from the numerator, that becomes x minus 3. You are subtracting 3 from the denominator, that becomes x plus 2 minus 3. And according to the given condition, this new fraction will be equal to what? 3 by 4. 3 by 4. Therefore, we have to write it as 3 by 4. Hamna? Yes, sir. Following? Yes. Okay. Next, numerator will become x minus 3 and the denominator will become x minus 1, and right hand side will be 3 by 4. Next, by cross multiplying 4 with x minus 3 and 3 with x minus 1, we have 4 into x minus 3 is equal to 3 into x minus 1. Obviously, simplifying it, 4x minus 4 into 3 and 3x minus 3. Next, we have 4x minus 12 is equal to 3x minus 3. Now take this 3x on the left hand side, 4x minus 3x, and take this 12 on the right hand side. This will become 12 minus 3. 4x minus 3 will become x, and 12 minus 3 will become 9. X is equal to 9. Now how can we get the fraction? Required fraction is x over x plus 2 according to this statement of the question. And now inserting the value of x, we have 9 over 9 plus 2. This becomes 9 over 11. This is our required fraction. Hopefully you understand these two questions about the fractions. Yes, sir.